Welcome back here with Money, Money, Money. We are deciphering and decoding all forms of debt instruments for you, and we have a couple of your queries that are now coming in. Joining us on the line is Mr. Ashwin Fauzdar, who is a retired professional. He's 63 years old. He's joining in from Mumbai. Sir, great to have you on the show. How can we help you? मुझे समझदारी नहीं आया कि मैं क्या कहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ. अभी हमारे बैंक एफडी में. और आपका रिक्वायरमेंट क्या है? मंथली इनकम. अच्छा ठीक है सर, तो हम अपने एक्सपर्ट से पूछते हैं. गौरव, इफ यू कुड हेल्प हिम आउट देयर. आपकी जो भी संपत्ति है उसके 3 भाग कर दे. एक जो आपको इमरजेंसीज के लिए चाहिए, वो पैसे करीब 1 हफ्ते के जो आपके मासिक रिक्वायरमेंट है वो कैश में रखे, बाकी सेविंग्स बैंक लिंक टू फिक्स डिपॉजिट कर दे. तो कभी भी कोई भी इमरजेंसी आ गई, हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ की इमरजेंसी वगैरह, अगर अस्पताल में दाखिला लेना पड़े तो आपको वहां से पैसे मिल जाएंगे, तो वो आपकी इमरजेंसी के लिए हो गए. जो मासिक आवक की जरूरत है, जो मासिक आय की जरूरत है आपको, उसके लिए 2 या 3 विकल्प है. एक सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, दूसरा पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम है, तो यहां से आपको रेगुलर इनकम मिलती रहेगी. उसके अलावा बैंक डिपॉजिट्स भी है जो आपको हर तिमाही आपको पैसे देती रहेगी. तो ये आपका दूसरा ऑप्शन हो गया. और अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जो पैसे है उसमें वो आपकी जो संपत्ति है उसमें वृद्धि होती रहे, वो बढ़ते रहे, तो कंपाउंडिंग प्रोडक्ट कोई भी ले ले जहां से आप ब्याज नहीं निकालेंगे. हालांकि मैं ये भी चाहूंगा कि क्योंकि आप अभी आपके 60 के दशक में है, अगर थोड़ा बहुत इक्विटी एक्सपोजर ले सके तो म्यूचुअल फंड के जो मंथली इनकम प्लान्स है उसमें निवेश करके ग्रोथ ऑप्शन में चले जाए तो 20-25% उसमें इक्विटी रहेगी. तो आपका जो ओवरऑल कॉर्पस है जो आपने इसमें निवेश किया है, हालांकि वो डेट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स गिने जाते हैं, उसमें आपको थोड़ी बहुत वृद्धि मिल जाएगी, थोड़े बहुत आपके रिटर्न्स बेहतर हो जाएंगे. लेकिन ये हालांकि ये रिटर्न्स निश्चित नहीं है, गारंटी नहीं है, ये चेंज हो सकते हैं. ओके, तो दैट्स द एडवाइस. ध्यान में रखिए सर, अगर आप इक्विटी का थोड़ा एक्सपोजर ले रहे हैं तो लेकिन ये ध्यान में रखिए कि उसमें एक रिस्क एलिमेंट इन्वॉल्व रहता है. ओके, लेट्स मूव ऑन. वी हैव अनदर कॉलर जॉइनिंग इन एंड आई थिंक इट्स प्रसाद श्रीराम हु इज ऑन द लाइन फ्रॉम विशाखापट्टनम. सर, थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू मनी मनी मनी. हाउ कैन वी हेल्प यू? My question is, I am a retired person, just like the earlier caller. Just I would like to know, as he is saying, my money is also lying in bank deposits. Okay. So my main concern is the high growth of inflation, and the government is reducing all interest rates. Bank interest rates are coming down, and the government savings rates are also coming down. So where can we put our money to hedge the inflation? Absolutely. Gaurav, this is a query we've actually got from other viewers as well. People who are now touching 60 and are saying, okay, I have a limited corpus, I'm not earning anymore. I have to try and maximize this corpus in the best possible way to cover the next 20 years of life, given that, that's the usual life expectancy. Well, they have to live with that risk. I mean, I know it's a difficult situation, and it's easier said for me than for them to actually do it. I don't know how I'll react at their age, but the fact is that they'll have to have some kind of equity exposure. And hence, to that extent, these mutual fund schemes, which has about 70-80% of corpus going into debt instruments, and rest 15 to 20% gets into equity. Now, most of the monthly income plans will have that. Or we also have mutual fund schemes which are hybrid. So they would upfront kind of say 20% into equity, rest into debt. Take those, make investment to that, go for growth option. So that small equity component will give that kicker, which is a probability of beating inflation. But at the same time, be prepared that there could be volatility. You could have little turbulence coming in your overall investment portfolio. Okay, so that's add a little bit of equity if you can take that risk. For those who don't want to take that risk and stay with the most attractive debt instruments at 60, what's your advice? Are bank deposits still the best way to go? So corporate deposit was, I said, no, okay. So that's ruled out. Yeah. Yes, so then shop around, and whoever is giving you best returns between bank deposits and the small savings scheme. And the senior citizen scheme, which seems to have the best return right now. Yeah. So between the two, whoever is giving you better return, just lock your money into it and you're fine. Unless you are in a higher tax bracket, then the infrastructure bonds will also score. But he said he's in 10% bracket, so just fine. All right, so hopefully that should answer your questions. And on that note, we are out of time on this week's edition of Money, Money, Money. Gaurav, thank you so much for joining in and taking all of the viewer queries. And thanks to all our viewers for watching and writing it. And keep doing that. Keep getting in touch with us. Our email ID and Twitter handle would be on the screens. Until next week, thanks for being with us.